represent करें. So we did in the previous class. So in today's class, I'll just conclude it in the sense that how we can relate, how we can also tensorially represent relativistic potentials. एक normal electric field at a given point कैसे हम नोट करते हैं, dV by dx, ठीक है? But we have also introduced something called scalar potential and something called vector potential. So you might have heard, you might have known, so it's relativistic potentials. Because हम क्यों कह रहे हैं relativistic? Because we are studying special relativity and electrodynamics. We are seeing particles moving at very high velocities. So उस वक्त जो टाइम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है. So उसकी वजह से जो हमारा जो फील्ड है, if you want to restate or redefine field in terms of potential, जो हमारी डेफिनेशन है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट हम ऐसे ही करते हैं. और if you might have if you remember, it's also a sort of potential we add. या आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ ए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डेल वेलोसिटी. सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग. नॉर्मल पोटेंशियल है वो माइनस स्पेस का डेरिवेटिव E इज नॉट माइनस डेल V d by dx ऑफ d by dy ऑफ d by dz ऑफ कोई भी स्पेस एलिमेंट का कैसे डेरिवेटिव होगा. सो बट दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ दिस V एंड A, B इन टर्म्स ऑफ A. अब ये है कि दिस पोटेंशियल फॉर्मुलेशन हमको वी हैव टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ टेंसोरियल रिप्रेजेंटेशन. टेंसोरियल रिप्रेजेंटेशन मींस फॉर एग्जांपल ए न्यू हमारा है, एक तो ये है अपना v by c, इसका वेलोसिटी क्या है, एंड द पोटेंशियल इफ यू वांट टू से ax में ay में एंड az, जिसका हम कहते हैं न्यू हो गया space-time coordinates. Mu varies from 0, 1, 2 and 3, or it can be n also. But for if the space has 3 dimensions, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. ये 0 है, ये time है. Since time को भी हम space के साथ relate करते हैं, हम उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं c. Because there is an embedded definition of time in this c. So जो 4 म्यू है, म्यू का अब ये अपने पोटेंशियल फॉर्मुलेशन ऑफ म्यू ये इन टर्म्स ऑफ ये वी कैन राइट इट लाइक दिस. एंड इफ यू रिमेंबर, लॉट ऑफ यू हैव नॉट कम, हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इन द टेंसोरियल रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ एफ म्यू हम कहते हैं इसको एफ म्यू. दीज आर रैंक टेंसर ऑफ रैंक 2 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कोई भी है, ठीक है, उसके 16 कंपोनेंट्स आते हैं, which is represented by tensor of rank 2. For example, we represent it like C dy by C, z by C, and it's an antisymmetric tensor. For example, ये प्लस से माइनस, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये z है, by है, ey by c इसका ये माइनस ez by c, by es z 0 and ठीक है. So this is F mu. F mu is a tensorial representation of E fields and B fields. क्या होंगे उसके 16 कंपोनेंट्स आते हैं. नॉर्मली स्पेस टाइम जो है ना, स्पेस टाइम है ना 4 कंपोनेंट्स. दिस इज tensor of rank 2. 4 यहाँ से आएंगे 4, so will be 16 components E and B field, ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट का रेडियल कंपोनेंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे. सो एट गिवन पॉइंट जो E fields and B fields के कंपोनेंट्स चेंज होते हैं. How the components of E fields and B field transform. जिस तरह आप कहते हैं ना V x is equal to V is equal to Vxi V by Vz, यहाँ E is equal to EXI EYJ plus EZ. B
बट ई फील्ड जो और बी फील्ड के कंपोनेंट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पेस में, ठीक है, मैन टू रेफरेंस फ्रेम्स आर मूविंग, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 2 एट ए गिवन पॉइंट u एंड u रिप्रेजेंट 0 1 x y z 0 x y। सो उसके दोनों कंपोनेंट्स कैसे चेंज होते हैं विद टाइम कोऑर्डिनेट और x y z कोऑर्डिनेट्स। इसलिए mu goes from 0 1 to 3, mu goes from 0 1 to mu may be E fields के components, mu may be B fields के components, and total are 16 components। अब अगर ऐसे है तो represent it like this, so how we are also, क्योंकि अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली पोटेंशियल फॉर्मुलेशन, we can also define electric field in terms of potentials also, potentials को भी हम कैसे in terms of tensorial language कैसे लिख सकते हैं। so अगर हम जो FU है FU को हम ऐसे और at a given point of FU को ऐसे लिख सकते हैं। It's how this potential changes with respect to x field। ये mu है, ये mu है। So ये potential form, so at a given point FU जो होगा, it's how the difference of the two ऐसे लिख सकते हैं। If you can see back here how we define FU। अगर हम ऐसे define करेंगे तो for example you just see हम कर रहे थे पिछली बार F01 02 ये है ना 00 01 02 03 ये 1011 121 2021 2223 नहीं 01 02 03 01 नहीं 0001 02 02 1011 121 ऐसे 2021 2223 3031 3233। तो डायगोनल कंपोनेंट्स आते हैं किसी भी एंटीसिमेट्रिक टेंसर में वो 0 आते हैं, ठीक है। जैसे ax y minus b/x, if x is equal to y then this। so अगर हम एट ए गिवन पॉइंट, अब इसमें आप लेंगे mu and mu की डिफरेंट वैल्यूज आप लोगे। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक f01 इट विल बी इक्वल टू शाबाश, और mu की वैल्यू आएगी mu is 1, mu is ये है ना 0 माइनस mu is 0 एंड mu is 1। ये किसके बराबर है? देखो x0 हमारा ये है, x0 ये ct के बराबर, इट्स dA1 और dA by c जो dt रखते हैं एलिमेंट रखते हैं माइनस dA0 ये हो गया x y z, सो इट विल बी dA x dA y dA z, तीन कंपोनेंट्स आएंगे। सो ये आएगा dA0 किसके बराबर आएगा? dA0 आएगा बराबर dA0 आएगा बराबर सॉरी इट विल बी d by dx1 आएगा बराबर इसके बराबर। so you can take d by dx, x2 के बदले आएगा d by dy, so you can represent it like d by dx है ना, d by dy plus d by, so इसको आप ऐसे डेल के साथ भी रिप्रेजेंट करोगे है ना, so you can see वहाँ पे c को बाहर निकालेंगे, we write it like this, so it will be dA by dt प्लस ये माइनस माइनस है, माइनस से जब हम माइनस बाहर निकाला it will be डेल, और we're coming back to where we started। बेसिकली हम पिछली बार हमने ऑल द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन प्लस लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने इलेक्ट्रोडायनामिक इन टर्म्स ऑफ टेंसर लैंग्वेज, हम अब पोटेंशियल फॉर्मुलेशन को भी इन टर्म्स ऑफ दीस टेंसर कंपोनेंट्स। सो वी आर कमिंग बैक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल फॉर्मुलेशन, हम पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V एंड A। सो
This is also as if we are writing, we are coming back to where we started. So this is the tensorial way of writing this equation. Or ये है इसके बजाय आप simply लिख सकते हो ax by c. You can do the same for x component, y component or z component. तो हम ऐसे लिख सकते हैं. If you want to write components, you can ax ये अलग, y अलग लिख सकते हैं. अब इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल आप देखो आप दूसरी चीज the other thing you can see it the other thing is that now how we can write a magnetic field. Magnetic field to S. For example now A01 for example we will take F1 F0 ये आप यहाँ लिख सकते हैं 01 02 03 है ना. F1 कौन सा आएगा ये 10 आएगा ये 11 आएगा ये 12 आएगा है ना. तो F12 को पहले आप देखेंगे यहाँ पर देखो इक्वेशन ये आएगा ऐसे dA2 by dx1 minus dA1 by dx2. आप देखो यहाँ पर just see it here. ये है ना if you remember हम कर्ल ऑफ द गिवन क्या लिखते हैं ये है ना 2 1 ये 1 2 है ना. मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं कंपोनेंट्स उसके. सो इट इज एज इफ वी आर राइटिंग इट लाइक del cross E into Z. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको you can write it like this. You can write it like for example, you can write it dA2 ये है dA y है ना. 1 हो गया 0 हो गया टाइम कोऑर्डिनेट 1 हो गया x ये हो गया y by dx minus dAx by dx. हाँ dx. So now you can write it in terms of del cross. So what you can write it as del cross E Z. Or you can write it as magnetic field. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना dE by dx minus dB by dEx by dy minus dEy by dx ऐसे करते हैं क्रॉस. So this is so del cross A को in terms of B is magnetic field. Now the same you can take one components to one other components also. The point to mention is that you can be write ये तो हमको जनरल पता है E field. Can we write this potential जो magnetic field B is equal to del cross. If you write magnetic field in terms of A, if you write electric field in terms of A, how we can write them tensorially? ये वाला हमने arrived at it. Similarly, to arrive at V can be represented in terms of del cross E. ठीक है? What my point is? So it's how we represent it in tensor for magnetic field at a given point. अब हमारा ये है the thing. Important thing is that if we represent f mu ऐसे f mu को हम ऐसे करेंगे, then the point is how can if you see जो हमारा maximum equation पिछले the last class we said कि जो df mu by है ना ऐसे 0 and mu naught j and g mu by dx mu is equal to 0. If you remember, तो ये हमने we start from these two equations we arrived at Maxwell's equations. You just see it back in the book. ये देखो ये यहाँ पर है this is a dual tensor. इसी का ये है f mu. इसका dual space में these components are there. सिर्फ इसमें E field यहाँ जाएगा ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा. It's the same thing but transpose करके. As something exists in one space, you want to see it in the dual space, inverse space में देखना चाहते हैं.
द एलिमेंट्स विल क्रिस क्रॉस। तो जो ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स हैं इन द टेंसोरियल फॉर्म, या तो इसको एफएमयू में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय जीमी, ठीक है, इन द ड्यूअल स्पेस। So for starting from the previous class, if you start from these two equations, they subsume these two equations. देखा, ठीक है? We can arrive at all the Maxwell's equations की representation, ठीक है? अब मसला ये है, for example, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कोई भी फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये कंपोनेंट्स है, ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स, इस स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक रेफरेंस फ्रेम है और दूसरा रेफरेंस फ्रेम है, they are relatively, how you can measure ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स, बिकॉज एट स्मॉलर वेलोसिटीज तो कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि रिलेटिविटी में हमारा टाइम चेंज हो गया था। तो हाउ वन रेफरेंस फ्रेम विल मेजर ई एंड बी फील्ड्स एंड द वाइस वर्सा, ठीक है, स्पेस में कैसे कंपोनेंट्स चेंज हो गए। अब ये देखो यहाँ जो एफएमयू में है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स टर्म, जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी। जैसे कोई वायर है, उसमें आपने चार्ज डाला है ना, उसमें साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि करंट भी प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। सो जो भी कंपोनेंट्स है ना, स्पेस के साथ जो डिपेंड्स अपॉन द सोर्स टर्म, म्यू नॉट दिस करंट डेंसिटी जहां से प्रोड्यूस हो रही है, इसमें सोर्स टर्म नहीं है। चलो, वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस इक्वेशन। सो इफ यू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन दैट, तो हाउ कैन, फॉर एग्जांपल, आप इसको हम एफएमयू को अपना हम लिखेंगे ऐसे, एफएमयू जो हमने लिखा था now this is what we are going to do. इसको हम in terms of space derivative मतलब स्पेस में कैसे चेंज होता है, in terms of coordinates and in terms of time, x0, x1, x2 and x3, ठीक है। स्पेस इज मेड ऑफ 3 डायमेंशन। स्पेस टाइम में कैसे ये कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं ड्यू टू द सोर्स करंट, ठीक है। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव ये एफएमयू का डेरिवेटिव ऐसे, इसको हम डू नॉट जी और इसको डू, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आएगा म्यू नॉट जी। नाउ वी कैन हैव डेरिवेटिव ऑफ दिस डी बाय dx u ऑफ dA mu by dx mu minus d by dx mu dA mu by dx mu, is equal to mu naught। यहाँ तक ठीक है। Now you just see इसमें एक one of the ये mu and mu contract करते हैं, this term will not contribute, ठीक है। This term will only contribute. So if you see it will come out. And before saying that, I'll say that if you read the passage of the book, it seems interactive in the sense that हमारा मकसद ये है कि, for example, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, is equal to del है ना, मगर आप यहाँ del को ऐसे रखिए, v प्लस हम कांस्टेंट करिए, फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ, क्यों, इसके लिए ना डेरिवेटिव, स्पेस डेरिवेटिव तो कांस्टेंट का। सो इफ यू ऐड एनी पोटेंशियल में कोई स्केलर पोटेंशियल ऐड करेंगे, ठीक है, उससे ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज, उसी को हम कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसी को हम कहते हैं गेज इनवेरिएंस। वी कॉल दैट थिंग एज गेज इनवेरिएंस। गेज इनवेरिएंस मींस अगर हमारे पास a mu है पोटेंशियल and we add to a mu prime as some quantity a mu plus d lambda by dx mu। ये तो मैंने दिखाया आपको जनरल पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। अगर स्केलर पोटेंशियल में you add some potential which is varies with some constant, it will not change overall a mu का वैल्यू चेंज, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी, गेज इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज करने में हमको मदद मिलती है, हाउ वी फॉर्मुलेट द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, हाउ वी चेंज द पोटेंशियल बाय एडिंग सम कांस्टेंट टू इट such that the equations will be इनवेरिएंट, उनका फॉर्म सेम रहेगा, ठीक है, गॉट टू पॉइंट। अब ये प्रॉपर्टी हमारी मदद लगती है व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सिंस इट्स ये आपके
when we study potential and fields, वहाँ पर आपको ये पता चलेगा how for example जो Maxwell's equation है ना, del dot E is equal to by epsilon naught, del cross E is equal to, how this under this the B is equal to mu naught J plus mu naught epsilon naught D by, so these are equations है ना, if we have these two definitions, ये एक तो E का वैल्यू ये है और B का वैल्यू ये है, if we substitute them here for example, this equation will get modified with the altered definition of potentials in terms of A, ठीक है, and B, जैसे del dot E है for example, अगर हम इसको for example to give है थोड़ा ये to give a feel for example del cross E है, del cross E इसको हम माइनस dB by dt, पर b के बदले अगर हम लिखेंगे ऐसे माइनस del cross A by dt, तो ये चेंज हो जाएगा ना। अब इसको बोथ साइड से यहाँ लाओ, del cross यहाँ E प्लस dA by dt है ना। बट इफ ये जीरो है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, A डॉट B क्रॉस C डायवर्जेंस ऑफ कर्व जो होगा ना वो हाँ इट विल बी जीरो। सो इसके बदले आप ये del cross ये हो जाएगा, you can write E plus dA by dt. So this is, for example, if you write in presence of these two equations, how will then these Maxwell's equation transform under the redefinition of potentials? A खाली B नहीं, A भी है, तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस का अपना फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। सो आई जंप आई विल नॉट डू दैट। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि हम ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स को टेंसोरली कैसे रिप्रेजेंट करें। इन द प्रीवियस क्लास वी डिड फॉर जनरल मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इन दिस क्लास आवर एम वाज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रिलेटिविस्टिक पोटेंशियल्स, ठीक है। अब ये जो रिलेटिविस्टिक पोटेंशियल्स में अब हमारे पास जो ये आ रहा है जंप बुक में है, सो थोड़ा सा आप इसको याद रखो। सो once we do this exercise, del dot E जो है redefinition of potentials ऐसे भी हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज है, इसको you have to do it, and if it is zero, तो this equation का जो फॉर्म हमारे पास आएगा, तो इसका फॉर्म हमारे पास आएगा ऐसे d by dx mu dA mu by dx mu यहाँ so relativistic notation इसमें एक dA mu by dx mu तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर म्यू है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर म्यू वैरीज फ्रॉम 0, 1, 2 and 3. Mu also varies from 0, 1, 2 and 0 means time coordinate के साथ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इट्स वेरी टाइम। 1, 2, 3 हो गया x, y, z, ये x, बट इसमें मसला ये कि सिंबल्स है ना, ये इसका ये जो है म्यू नीचे है, इसका म्यू सिंबल ऊपर नीचे से होता है कि जब फॉर एग्जांपल इफ यू लोअर द इंडेक्स, जो टाइम कॉर्ड सीखनी है ना, अगर म्यू ऊपर है ना टाइम नीचे आएगा, ये माइनस आएगा। एक्स वाई जी में प्लस माइनस नहीं आता, अगर नीचे करोगे ना तो इसमें हमारे पास 9 टर्म्स आएंगे। क्यों 9 टर्म्स आएंगे? आने तो चाहिए 16 टर्म्स, बिकॉज दीज 4 टर्म्स विल नॉट कंट्रीब्यूट। 9 टर्म्स कैसे आएंगे? जिसका आप कहते हैं ना ऐसे, फॉर एग्जांपल dAx प्लस dAy प्लस dAz, इसका आप डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, है ना, आएगा d2 by dx स्क्वायर, d2 by dy स्क्वायर, d2 by dz स्क्वायर। सिंस यहाँ x y z कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ टाइम का कोऑर्डिनेट है, सो वी विल हैव टाइम कंपोनेंट आल्सो, बट टाइम कंपोनेंट आएगा माइनस में, है ना। तो हम यहाँ ये ऊपर है, ये इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स अपसाइड्स, जब नीचे करेंगे तो ये माइनस आता है इन केस ऑफ स्पेस टाइम,
टेंसोरियल सिंबल्स में आप देखें, ठीक है। व्हेन यू लोअर द इंडेक्स माइनस हो जाता है, वहां से माइनस का फैक्टर आएगा। सो इट विल बी द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ऐसे ऐसे डेल स्क्वायर अपना और टाइम का आएगा ऐसे माइनस 1/c² d2/dt²। इसको ऐसे ये हो गया d2/dx², d2/dy², d2 ये टाइम का कोऑर्डिनेट, ये माइनस का अपना फैक्टर आएगा लोअरिंग ऑफ द सिंबल्स। इसी चीज को हम समथिंग कॉल्ड, अगर आप बुक्स में देखोगे इसको हम कहते हैं डी एलम्बर्शन। क्या कहते हैं इसको? डी एलम्बर्शन क्या कहते हैं? डी एलम्बर्शन। सो वी रिप्रेजेंट इट एज स्क्वायर बॉक्स में ऐसे डेल स्क्वायर ए म्यू इक्वल म्यू नॉट जी, ठीक है। एंड दिस इज द सोर्स, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वेव इक्वेशन। जैसे कहीं पर कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस वजह से प्रोड्यूस, जिससे भी कोई सोर्स करंट है, जो ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इन रिलेटिविस्टिक नोटेशन देयर इज सम सोर्स करंट जो जिसकी वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड में इट्स सॉर्ट ऑफ वेव इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। which we will study later in the next chapter when we study potentials and fields। थोड़ा इसका in the detail form में हम इसको पढ़ सकते हैं। बट अब हम इसी को कहते हैं if you see, अगर हम इसको this is the most क्या है according to book, अगर हम इसको it represents the, अगर मैं बुक के अल्फाज यूज करूँगा, represents most elegant formulation of Maxwell's इक्वेशन तो हमने पढ़ी है, ठीक है। ये आप कह रहे हैं एलिगेंट, आपको और एलिगेंस तब दिखेगी जब आप थोड़ा सा टेंसेस पढ़ेंगे, वहाँ कैसे इक्वेशंस प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ हमारा व्हेन वी यूज टेंस लैंग्वेज, हाउ वी आर एबल टू राइट द सेम इक्वेशंस, नॉट लाइक दिस व्हिच वी हैव बीन स्टडीइंग, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी पिछले क्लास में हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस प्लस वो लोरेंट्ज फोर्स। सो इन दिस क्लास वी हैव how we represent potentials. This is कैसे हम in terms of tense to language represent, ठीक है। Sufficient.